He started it. Right. Okay. हाँ तो um, चलिए आपके लिए एक गीत. Yes, sir. धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम. टरारा टरारा. धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम. चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, चांदनी में सो लिए. हम भी प्यार से मिला, हम उसी के हो लिए. हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए. जो भी प्यार से मिला, हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए. जो भी प्यार से मिला, हम उसी के हो लिए. तो बस यही मैसेज है आपके लिए. Thank you, sir. Thank you very much. मिले, धूप मिले, छाँव मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है. प्यार, बस प्यार से चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे. Yes, sir. Thank you. Wonderful, wonderful. Okay. Yeah. Wow, Sanjeev bhai, what an idea this is. Personal गाना, मजा आ रहा है यार. This is so thrilling. Tell me your feeling, Prakash ji, Amit ji, आपके लिए song dedicate हुआ है. Imagine बहुत how बढ़िया. brilliant this is. Yeah. बहुत Super. अच्छा लगा. Very nice. Who's coming next? Wonderful. Who is next? Yes. Raise your all virtue. can. Yeah, put your hand up. Sonal, would you like to come? Yeah, Kritika ma. Kritika ma. Yeah, Jennifer ji. और भाविशा पटेल. चलो आपसे बात करते हैं. कहाँ पे? बहुत ही हसीन जगह है, लग रहा है. It's Hi, Jai Gurudev. Jai Gurudev. Looks like a very nice place you're in. Yeah, I'm running in the woods. In the woods. Yeah, you're in a forest. Wow. Where are you? So I'm in Boston area, Okay. north Wonderful. of Boston. Okay. And I have a marathon, Boston marathon coming up in like 2 weeks. So not next Monday, following Monday, I'll be running it. Okay. Okay. So Wonderful. just doing the training, but today's session is really interesting. And I think what sparked my mind to put my video was the song was dedicated to the personal. So I'm so excited to hear my song. But Sure. really like my life right now, I feel contented to the one point, and then if I don't reach to my goal, I feel a little anxious about it. Right. But I had learned how to flip that, detach it, go back to the peace and learn that. But I think I'm still evolving. I'm still like molding myself to that point. There are points that it comes, I get quiet. I don't really want to talk to anyone and just sit in my room and close my eyes. Right. Instead of barking on my kids and my husband. But I would love to have that state of mind where it's stable, that Right. I got Right. injured while training, so that made me unstable for a while. But then I started TSC with Manojji and the team. Okay. That made me go in the route, and I'm running Boston, which is 43 kilometers, and 5 days later, I'm running in London, 43 kilometers. So I think I am Wow. just so excited, and right now I'm in cloud 9. So that's all Right. my life about. Wonderful, wonderful, wonderful. Right. And thank you so much for being with me in my run. My goal Sure. today is to run 25 kilometers. So I would love to hear you all and just go with it. Yes, yes, yes. Wonderful, wonderful. So, that anxiety that you mentioned, you can easily drop it by knowing that
You are not running the marathon. Okay? And let me explain what I mean. The body is running the marathon. The body mind is running the marathon. You are simply going along for the ride. Okay? Agree. You are just along for the ride. And now, if you're just along for the ride, then what is important? The journey is important. The journey is Totally. important. The process is important. The anxiety comes from wanting to achieve a certain goal. The goal is useful only to give you a direction, to give you some kind of a compass about where to head and what direction to move this body towards. But the goal is not the purpose. The goal is not the purpose of the marathon. The purpose of the marathon is to simply enjoy this journey called running, enjoying this process of 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 uh, of getting stronger, your body getting, the body becoming stronger and stronger, more and more agile, and more at peace, so that even in the middle of the run, no matter how much activity is going on, no matter how hard you're breathing, no matter what is happening to the body, being able to connect with that core that does not move, that does not go anywhere, that is always present. Simply a matter of looking in the middle of the run or any point, any moment, finding that core of who you really are, which does not go anywhere. There is no time for that core, there's no place for that core, there is no location of that core. It is just there, everywhere, in every moment. And that core. So if I ask you the question, when you run, when you are running, is the body running by itself? Does the body run by itself? No. Nope. There is you. You are saying to the body, yes, go, go, go. And the body just obeys the order. So that which is running the body is not the body. And that which is running the body is simply along for enjoying this ride. Not just this ride called the marathon, the Boston Marathon or the London Marathon, but the ride called life itself. So वो ride को enjoy करना है, and when you get in touch with that, which that in you, which is simply here for the journey of it, is simply enjoying every moment. Whether you reach that goal, this goal, bigger goals, very good, wonderful, but that's not the point. That's not the purpose. So when you drop that, along with that, you can drop the anxiety about it, because the anxiety comes from, will I make it, will I not, will I do it without getting any all that, whatever thoughts that are coming, the anxiety comes from the goal. So drop that, the enjoying this training itself. I play tennis, I play cricket, I play a lot of games, but sometimes I was thinking about कि cricket especially is a very very funny and cruel game. हो सकता है आप पूरा दिन फील्डिंग करो और आपकी बैटिंग आए और पहले बॉल में आउट हो गए, पूरा दिन वही, इट्स अ वेरी क्रूअल गेम. बट सो आई सेड, व्हाई डू आई कीप डूइंग इट? बार बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा हो जाता है. बट इफ यू थिंक बैक on what is the most, to me, like the one of the most precious moments is getting everything ready. Your bag तैयार कर रहे हैं, ये टेनिस के लिए जा रहा हूँ तो the wristband, the armband, the tennis racket, the water bottle, the shoes, the headband, and all that, getting all that ready, preparing, getting the bag ready. चलो सब कुछ आ गया, all that moment of anticipation of the journey itself, that's the great part, that's the fun part, and that is available all the time. In fact, you're on this run on a preparation, so that is also part of the fun. So enjoy the journey. Don't, when you drop the anxiety, worry about the goal, then the anxiety will automatically just disappear, and every moment becomes a joy. And you will, in fact, why why we run marathons, why we do bungee jumping, why we do jump off of aircrafts,
ultimately, this is a spiritual pursuit. Meditation karo, bhajan karo, puja karo, they are clearly meditative pursuits, because you are making an activity which takes you to your own true self. True. Marathon running is nothing different. Running a marathon, the entire purpose is to move and move and move, so that you get in touch with that which does not move, which is you, the real you. To come in contact with that is the purpose of the marathon. I remember my granddaughter, who's only like 10 years old, she ran a mini marathon, just 5K or something like that. And she ran it with my son-in-law, and the two of them ran this marathon together last year. Mini marathon. Mini means mini for children. But we were waiting at the finish line, and as they came around the last stretch, I was just watching them, and she was smiling. And I asked her afterwards, and she said, I asked her, how did you feel? What happened? She said, Dadaji, that last stretch, I was flying. I was flying because unknowingly, automatically, the body drops away at some point and you become present. And when the body drops away is when this experience of you as the God of your life, of your universe, becomes present. And the body is just an instrument. The pain disappears. The anxiety, of course, is gone long before that. And you're simply flying. And she got that. So that's the whole purpose. Why do people do bungee jumping, put their lives at stake? Because for that one moment, the mind is dropped. For that one moment, you cannot help but drop the body. You cannot help but drop that, so that you touch for that one moment the real you. And that is why it is a spiritual pursuit. It's as spiritual as doing bhajans and puja. So this is your puja. Thank you so much. That was amazing. Thank you. Sorry, Sanjivji, to interrupt. This is Hardik here. Hardik, hi. I'm a hardcore. I'm in taxi, so my video थोड़ा light नहीं आ रहा है. But I'm a hardcore marathoner, and मैं और मेरा twin brother Pratik, हम लोग we are mad on running. Right. So I think, हाँ, तो आपने जो बोला, I think really heads off to give us so much of spiritual knowledge on running. Absolutely. Really, thank you. Most welcome. Actually, there's a book, people, I'm forgetting the title. I'd gifted this book to my son-in-law. I'll ask the title and pass it on to you guys. But it's about that. Why? I mean, who in their right mind would run a triathlon and a marathon where you're putting your body Same through people have asked me question, how can you run Right. 90 kilometers? How can you do 16 hours of Ironman? I know. So- How can you do it? But here is why, Hardik, why you do it is because that is a path to your inner self. It's just one way to go past the body so that you reach the true self that you are. And that is why it's so exciting. And that is why it is so wonderful. And that is why it's worth doing. So great. So Thank you. I would need that book, sir. yeah, I'll pass on that name. So here's the song for Bhavisha and Hardik. So every journey, there is only one goal, and that is you. तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, मुझे
आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी जमीन, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, जमी पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना तू बेखबर, मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर। एंड दीज वर्ड्स, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। Wow, wow, wow. So the key line in this, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, and this is the message. सफर खूबसूरत है, it's the journey, it's the journey is the journey that is more beautiful than the destination. And when we really live like that, when we really start living like that, then this whole journey of life itself becomes this heaven, which it is meant to be. You know, we are waiting for some heaven afterwards, bliss, nirvana, ये वो मोक्ष मिल जाएगा। मैं कहता हूं कि इसी जन्म में, इसी जगह में, यहीं पे अगर मोक्ष पाना है तो यहीं पे मोक्ष है। बाद में क्या है क्या पता है, वो मोक्ष मुझे तो लग रहा है बड़ा बोरिंग होगा। यही जो संघर्ष है, जीवन नाम का जो संघर्ष है, this ups, this downs, all these people with so many different personalities, ये चुनौतियां जो हमारे सामने आती है लोगों के जरिए, परिस्थितियों के जरिए, ये चुनौती अगर आनी बंद हो जाएगी तो करेंगे क्या हम यार? कितनी वैरायटी है उन्हीं को पार करने में, उन्हीं को देखने में, उन्हीं के साथ रहने में, और सबसे ज्यादा महत्व उसी में प्रेम का अनुभव करने में, कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, व्यक्ति जैसी भी हो, उसके अंदर, उसके साथ भी हम प्रेम का अनुभव करें। तो that is the ultimate trip. You know, in heaven, so called,
अच्छा म्यूजिक बज रहा है, सब अच्छे ही हैं लोग, अरे उनको प्रेम कर लोगे तो भी क्या उखाड़ लिया यार, प्रेम हो ही जाएगा उनके साथ, तो वहां भी प्रेम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है, यू नो, द all the range of personalities from saint to terrorist is available, और सभी को आप क्या प्रेम दे सकते हो? Can you experience that with everyone? That is the challenge, and that's the fun, and that game is only available on this planet called planet Earth. On this earth plane ही ये मौजूद है। वो वहां की क्या गेम है मुझे पता नहीं, वहां की गेम वहां जाकर खेल लेंगे, लेकिन यहां बैठे बैठे वहां का क्यों सोच रहे हो? अभी तो यहां हो, अभी तो इस शरीर में हो, ये गेम खेल रहे हो, खेलो यार पूरा पूरा, चाहे मैराथन दौड़ लो या सितार सीख लो या जो भी करना है कर लो, बट आपकी मनोस्थिति यही हो कि मैं अपने आप को कैसे ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा प्रेम की ओर ले चलूं। हाउ कैन आई फील लव? इनफैक्ट मैं आज किसी से कह रहा था कि आजकल यार ऐसा लग रहा है कि देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डू और से, you know, just go around saying wow, 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 wow. मतलब कुछ कुछ रहा ही नहीं, यही है बस, just go around saying wow, जो भी मिल गया wow, जो भी सामने आ गया wow, you know, continuous wow to everything and everyone. Great. किससे बात करें अब? चलिए, कौन है? Who's next? Who'd like to raise your hand and we'll turn on your video and Raise we'll your have a hand. Who one-on-one. wants a personal song? मीरा, ओके, चलो बात करो अब। Okay. Oh, that's great. Yes, Sanjeev bhai, if you're choosing me, can I? Yes, please. Oh, I would love someone dedicating this song. इसी में ही मैं फिदा हो गई. Sure. So, You can okay. pick your song also. I have no problem. You are free to tell me what your नहीं, favorite song is. anything, संजीव भाई, मेरे लिए कोई भी ऐसा मौका कोई भी नहीं हुआ है, कोई मेरे लिए कोई गाए तो आई एम सो थ्रिल्ड, मैं तो जंप करूंगी, आप गाइए बस. वो एक कल एक गाना याद आ गया था, ऐसे ही बात करते करते किसी से, लेट मी सी, गाने से शुरुआत करते हैं फिर बात करते हैं। हाँ, संजीव okay, जी, yes. आगे भी जाने ना तो यही हाँ, एक पल है। आगे भी जाने ना दो, हाँ वो भी एक है, बट लेट मी सी। वाह वाह वाह, ये गाना कल ही याद आया था, उसकी हम लिरिक्स निकालते हैं, एक मिनट। Yes, Niyati ji, I'll be careful. I don't know how careful I can be, but I'm in a mood to dance. We are in a mood to see. Yeah. This is so interesting. I mean, so good, Sanjeev bhai. What a day today, musical day. I think it'll be very memorable for all of us. नहीं, यही फॉर्मेट अभी है आजकल में, तो यही फॉर्मेट में सब कुछ, सब सत्संग, हर ओपन डोर, एवरीथिंग इज इन Very दिस nice. Message भी वन मिल ऑन गया, वन music भी कॉन्वर्सेशन। हो गया, सत्संग भी हो गया. राइट, नो, क्योंकि वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन मीन्स किसी को तो ये रेलेवेंट है जो भी बात हम कर रहे हैं, It जैसे हमने means to all of बातें us. मैराथन से की, जो भी है इट्स रेलेवेंट टू दैट पर्सन, और उसमें जो बातें आती है सबके लिए कहीं ना कहीं Connection हो ही जाता. That's why we are all here together. So it's meant for all of us. Let me put my crown. this your crown, yeah. Yeah. ये हारमोनियम के लिए, ओके।
अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। इंसान बन गई है किरण माहताब की, अब क्या मिसाल दूं। महाताब यानी मून, इंसान बन गई है किरण महाताब की। एक मून का एक रे, मून बीम हैज बिकम अ पर्सन, एंड ऑफ कोर्स इट इज ट्रू अबाउट यू मीरा, एंड इट इज ट्रू अबाउट ईच वन ऑफ यू। चेहरे में घुल गया है हंसी चांदनी का नूर, आंखों में है चमन की जवारात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली, डाली गुलाब की, अब क्या मिसाल दूं। Each one of us, each one of you is divine. Each one of you is a condensation of divine truth, of divine love. Divine love has condensed into different drops. And that divine love has rained down on this planet. And one drop is called Deepak, and one drop is called Kavita. One drop is called Meera. One drop is Chirag, one drop is Manjo, one drop is Rupali. But all drops from the same cloud, all condensation from the same vapor, the same water vapor, which is nothing but consciousness, nothing but divine love. So when we start to recognize this, जब हम ये बात समझ जाते हैं, that हर एक ये एक बूंद है, condensed in this shape, in this form, in this name, but originating from that same one source, which is the ocean. और वैसे जीने लगते हैं, then life is a miracle, continuous stream of miracles. So any question you have, Meera? Any thoughts, anything you want to share or say or ask? No, I felt very good. If you want to ask, I want to share first what I felt when you were singing. I felt very good. because मेरे लिए कोई बोलते हैं बोलने के लिए make me feel special, पर गाना किसी ने भी नहीं गाया है मेरे लिए. So it was a wow feeling for me. So I was very happy for that. And yes, want more money. So Want more money? Yeah. Acha. Yeah. Okay. So पूरा सेंटेंस अगर आप एनालाइज करोगे, ओके, आई वांट मोर मनी, तो उसमें बहुत सारे चक्कर है, बहुत सारी गलतियां हैं. Really, see, each word of it there is invalid, is incorrect. I'll tell you why. Every single word of this sentence, I want more money, हर एक शब्द में गड़बड़ है. Because first of all, let's take the word money. तो money itself को क्या करोगे? खाओगे क्या? जलाओगे नोट को? नहीं. तो money, you think you want money, but it's not money that you want. क्योंकि money, मान लो एक
एक ढेर पड़ा है आपके सामने मनी का राइट नाउ, 2,000 की चाहे जितनी नोट पड़ी है आपके सामने, क्या खाओगे उसे? देखोगे एक बार, हाँ बहुत अच्छी है, बट बाद में क्या हो? खरीद सकते हैं ना पैसे। Right. So you don't want money. You want what money gets you. So let's keep going. You want what money gets you. So I want more money. हाँ, So forget that word money. I don't want money. What you really want is what money can get you. Okay, which is experiences or things. Chalo, things le lete. You can buy more things, you said. So let's cancel the word money and put the word things. I want more things. तो अभी यहां भी देखते हैं क्या क्या गड़बड़ है कि थिंग्स को क्या क्या करोगे क्या? लेट्स से यू हैव ऑल दीज थिंग्स सराउंडिंग यू, वॉट एवर दीज थिंग्स आर. व्हाट थिंग्स? फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है. नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। नहीं, ये गलत फहमी है मीरा. हाँ, Come out of this. Yes, yes, Yeah, ये गलत फहमी है. You don't want more money. Nobody wants money. It's a fallacy that the human race is walking around with, that they want more money. They don't want more money. They want ultimately, okay, if you go follow this logic, the money, what you want the money for is the things that money gets. True. Or the experiences that money gets. True. So एक तो cancel कर दो, I want more money. जी, cancel. फिर अभी then let us take this I that wants. Okay, वहां भी problem है थोड़ा सा कि the I that you are is actually the creator of all that there is. ये सपना जो है, मान लो आप लेटे हुए हो, सोए हुए हो और आपने एक सपना देख रहे हो कॉल्ड लाइफ. तो वो सपने के अंदर आपका जो कैरेक्टर है वो यहाँ वहाँ घूम रहा है, सोच रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गहने चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, जो भी है. तो वो सपने में सारी जो चीजें हैं वो किसकी है? जो सपना देख रहा है उसी की तो है वो, क्योंकि उसी का सपना है भाई. तो द आई दैट इज ड्रीमिंग दिस ड्रीम कॉल्ड लाइफ is the creator of this entire dream. so there is nothing that is not belonging to that I. So I doesn't want anything. Okay, this condensate, this limited self body called Meera may say that Meera wants something, but I don't want anything. I doesn't want. तो हमें ये vocabulary भी ठीक करनी है. I doesn't want. There is no want in I. I is all that there is. I is the creator, the maker, the content, the shape of everything that there is. I does not want anything. And the word want is a lack. मतलब ये मेरे में एक कमी है, ये एक lack है, और and I want. तो I तो is all that is. There is no want. There is no lack. So the want also वो शब्द में भी कुछ देखना है. पूरी लाइन ही मेरी गड़बड़ थी. पूरी लाइन. और मोर क्या होता है भैया? सब कुछ जब आपका ही है तो मोर क्या होता है? When you are the infinite, can there be something more than infinite? I want more than infinity. There is no such thing. So what Meera wants, or what Meera thinks she wants, is not money. Meera thinks she wants, but what she really wants is the whatever money can get. And actually, she doesn't even want whatever money can get. She wants the experience that she feels when that thing or that object or that place happens. घर को खा नहीं सकते हो, घर में जाके जो अनुभव होता है बड़े घर में, वो अनुभव चाहिए. That is what you're really looking for. Meera is not looking for a car. Meera is looking for the experience of sitting in that car and enjoying the breeze and enjoying the whatever that experience is. So Meera doesn't want money. Meera doesn't want things. Meera doesn't want a car. Meera wants this experience of joyousness. Meera, we want Sanjeev Bhai to give us these experiences. Right. So Meera wants the experience of joy. Meera wants the experience of love.
And that is what you really want. That is what Meera really wants. So Meera is looking for the experience of joyousness. That is what Meera is really looking for. और उसको ट्रांसलेट करते 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 उतना वो मतलब उसको क्या कहते हैं उससे, उसका फिल्टर करते करते आई वांट मोर मनी तक पहुंच गया वो. ओके, बट द ट्रूथ इज मीरा वांट्स टू एक्सपीरियंस जॉय. मीरा वांट्स टू एक्सपीरियंस लव. And Meera has forgotten that Meera is love itself. Brilliant. Super. Super. Only when Meera forgets that she's love does she want love. Want meaning lack. I don't have enough love. When she remembers that she is love itself. Superb, Sanjay bhai. Thank you. Wonderful. Sanjivji, So, Sanjivji. yeah, Shri ji, boliye. In a way you are Namaste, hinting. Jai Gurudev. Kaise hai bhaiya? Thank you. In a way you are hinting that Meera wants to be with Meera. Meera wants to be with Meera. Absolutely. Kya baat hai? Badhiya. Meera wants to be with the real Meera. That is you. You know, take everything in life, all the businesses, everything, all our activity is targeted at what that activity is going to bring me. Because we forget that we are already that. वो जो हमने हमारे खुद की आंखों पे जो धूल डाली हुई है, उसी को लेकर हम ढूंढ रहे हैं आंखें बंद कर कि कहाँ है, लेकिन हम खुद है वही. So when we operate from that and we realize that, then Meera can come from that Meera that she is, the love that she is, and bring that love. And in that lovingness, there is only limitlessness, there is abundance, there is wealth. Wealth is a natural and automatic manifestation of love, of being in love. So हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं कि मनी से शुरू करें और लव तक पहुंचे. But the real journey is the other way, starting with love. And money is nothing. It's just one part of the dream. You are the creator. You can create as much money as you need and as you want. Great. So time check kar le thoda sa. Haan. Great. 1 or 2 more conversations we can have. And one or two देर लगी लेकिन हाँ मैंने अब है जीना सीख लिया. ये इतना मीनिंगफुल कन्वर्सेशन है, यही लाइन याद आती है. Right. Bilkul. Wait, where is that song? Rishiji is saying Meera is observing Meera who is playing the game of life. Yes, absolutely. Yes, who's coming in next? Sanjay bhai, are you singing or should we take another participant? No, another participant. No. Yes, who's? Really, sir, we would like to hear from you first. नहीं, ये हम तो बातें और गाना करते ही रहेंगे. चलिए कोई किसी और से बातें आवाज करें. सुनने के लिए भी हम बेकरार हैं. बिल्कुल गाएंगे, जरूर गाएंगे. चंदन भाई कह रहे हैं ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन. वो गाना गाइए आप. Ranjan, okay, I can't talk to him right now. Okay. रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया,
रंग दे चुनरिया, रंग दे, रंग दे, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे। ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे। धोबिया धुए चाहे, धोबिया धुए चाहे, सारी उमरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। And what is that love? That rang is the rang of प्यार, of प्रेम, of love. उसी रंग में रंगना है, वही चाहिए हमें। और हम कहीं कुछ और भटक जाते हैं, सोचते कि हमें कुछ ये चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए। अल्टीमेटली यही चाहिए, अल्टीमेटली यही चाहिए। सो ग्रेट। Who's next? किससे बात करें? चलो संजीव, मेरा ही नाम है संजीव कुकरेजा। हाँ जी, कॉलर पहना है क्या है? मास्क पहना है। मास्क पहना है, ओके, मास्क है, ओके, बताइए। अच्छा, मैं गुरुजी के लिए गाना गाना चाहता हूँ। अच्छा, गाना गाना चाहते हैं, ओके, बढ़िया, श्योर स्टार्ट। श्योर श्योर, गो अहेड। तो गुरुजी के लिए और सब SSY वालों के लिए, मनोज लेखी जी के लिए, सबके लिए। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यास, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। जय गुरुदेव। वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी नाइस, वंडरफुल। बताइए। सो व्हाट इज हैपनिंग? हु वुड लाइक टू हैव अ कॉन्वर्सेशन? चलिए, किससे बात करते हैं? दीपा, दीपा मडकी। चलिए दीपा, दीपा, आर यू देयर? हाँ, Yeah, she's there. यू कैन अनम्यूट। She's unmute only. हाँ। यस, जय गुरुदेव संजीव जी। जय गुरुदेव। 2 सालों से मैं आपके म्यूजिकल सत्संग सुन रही हूँ, लेकिन आज मौका मिला कि मैं आपके साथ बात करूं। वेलकम, वेलकम। मुझे भी अभी आपसे बात करने ऐसा का बिल्कुल मौका। नहीं लग रहा था कि मैं आज आपके साथ बात करूंगी। खाली राइट, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप जब गाते हो तो एक ऐसी स्टेट आती है कि इजीली कनेक्ट हो जाते हैं हम एक अलग एनर्जी के साथ। एंड वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। So what's happening? What's happening in life? How are you feeling? How are you doing? क्या चुनौतियां हैं लाइफ की आज आपके जीवन में? What is going on? What is uppermost? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 2 सालों से जिस कल्चर के साथ जुड़ी हूँ वहां से बहुत सारे ब्लेसिंग है। गुरु जी की ब्लेसिंग है, मनोज जी ने जो भी हैंड होल्ड किया है हमारा। तो एक ऐसा है कि जो भी आता है तो ऐसा होता है हाँ ठीक है ये भी निकल जाएगा। वो भी एक एक्सपीरियंस है मेरा, जो आया था एंड मैंने वो लिया एंड हो गया। Beautiful, beautiful, beautiful.
चमत्कारों की ही दुनिया है. हम चमत्कार करने वाले हैं सारे. We are all wizards. We are all creators of our life. We are all magicians. And only thing is, we forget that we are magicians. We think कोई और कर रहा है, लेकिन हम ही, हमारी परिस्थितियां, हमारी magic is our own. And when we know that, we can operate out of that. Wonderful. So, um, What's the magical song now? what is the magical song? अभी दीपक ने याद करवाया था तो वही गा लेते हैं. चलिए. देर लगी लेकिन मैंने अब है जीना सीख लिया. जैसे भी हो दिन मैंने अब है जीना सीख लिया. अब मैंने ये जाना है खुशी है क्या गम क्या, दोनों ही दो पल की है रुते, ना ये ठहरे ना रुके. जिंदगी दो रंगों से बने, अब रूठे अब मने. यही तो है, यही तो है यहाँ. देर लगी लेकिन मैंने अब है जीना सीख लिया. आंसुओं के बिन मैंने अब है जीना सीख लिया. तो देर लगी लेकिन सीख लिया. आखिर किसी ना किसी तरह सीख लिया. आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर इसका मतलब है आपने सारी बातें सुन तो ली ही है, या तो गुरु जी से या हमसे, SSY से, मनोज जी से, कहीं ना कहीं से आप यहां तक आए हैं तो आपने तो सीख ही लिया है. अब यही रहता है कि उस हिसाब से हम जिए, क्योंकि जानना एक बात है, समझना उसके आगे वाली बात है. देखिए, हम शुरुआत करते हैं अनजाने होकर, पता नहीं हमें क्या है जिंदगी, क्या है रियलिटी, क्या है ये सब कुछ जो हम सोच रहे हैं, वो व्हाट इज गोइंग ऑन, तो वो अनजाने हैं. तो नेक्स्ट स्टेप इज नोइंग, थर्ड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग, फोर्थ स्टेप इज एग्रीइंग, फिफ्थ स्टेप इज रियली नोइंग. But the last step
is where we all are. That last step is living it, living that knowledge. और वो जो last step है is made up of 1,000 steps. The 5 steps are very easy, very simple. You can read a book, you can listen to somebody, you can think for yourself. और यहाँ तक तो आप पहुँच ही जाओगे कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में. I want to be in love, I want to experience love, I want to give love. यही है मेरा मकसद. This is my real aim. This is my real journey. This is my real purpose at the end of it all. Whether I want health, I want wealth, I want relationships. Why do I want all this? Because I want to experience love. I want to give love. Health nahi hai to it's difficult. You are healthy, you are able to move, you are able to express yourself, to dance. तो ये सब जानना आसान है, समझना आसान है. कुछ लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते, लेकिन आप यहाँ पे है तो आप ये तो बात समझ ही गए हो कि this is what life is about. But this next step, which is the last step, which is the final step, is made of 1,000 steps, which is to live that knowledge. Do you live that knowledge? Moment to moment, moment to moment. No matter who is in front of you, no matter who is with you, चाहे वो आपके घर में स्टाफ हो, कुक हो या कोई क्लीनर हो, चाहे आपका एम्प्लॉय हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपके फैमिली हो, चाहे कोई स्ट्रेंजर ही हो. Can you repeat those 5 steps? Sorry? Can you repeat those 5 steps? I don't know exactly, but I'll see what it will. So the 5, you begin with not knowing. The 0th step or the first step is not knowing. You don't know. You don't know. And you don't even know that you don't know. That's the 0th or the first step. Then you hear or you read or you hear. Then you question, you doubt, but then eventually you understand. You understand and then you may not agree, but then eventually you agree also. And then you know that this is the truth for yourself. You may agree, but unless it is your own experience, you don't know it. So that is 5th or something like that. Knowing. When you know that this is the truth about me, I am that. I am love, I am joy, I am beauty, I am truth, I am energy. And that when you know all this, then the last step, which is 6th or 7th, I don't know, कितना हुआ? 6. तो हाँ, तो ये 6ठा या 7वां step हो जाता है living this knowing. And that is an endless journey. The 5 or 6 steps you can do in a course or in a meditation or ye or wo, but your whole life is that last step. To what extent are you able to live that in the face of all kinds of circumstances, all kinds of challenges, all kinds of things that come in? So one of the things is to actually even modify our vocabulary. हम जो बात करते हैं उसका जो तरीका है, जो शब्द हम यूज करते हैं, उसको भी हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है. कल ही हम बात कर रहे थे कि when you say simple thing like everything is just happening. There is no real solidity or substance to this notion, this idea called Sanjeev, this idea called Meera, this idea called Julie. उसको कोई हमें लगता है बहुत सॉलिड है, लेकिन जैसे एक सपने के अंदर भी हम अगर घूम रहे कहीं और कहीं सामने दीवार है, तो सपने में भी वो दीवार बड़ी सॉलिड लगती है. उस पे सर टकराएंगे तो लगेगा कि अरे यार लग गया और सर फूट गया या खून बह रहा है. लेकिन हम जानते हैं कि अगर सपने में एक दीवार है तो वो दीवार की कोई सॉलिडिटी है ही नहीं. वो ऐसे ही it just seems solid. There is no real solidity to it. The moment the eyes open, ना दीवार है, ना वो जगह है, ना वो रास्ता है, ना खून है, ना लगा है,
ना कुछ भी, एक बिल्कुल it vanishes. So living knowing this, becoming the creators in our life, becoming the yeah, the instrument, making this body that instrument through which love can flow, through which joy can flow, through which abundance can flow, making this body, using this time for that becomes the journey, and that is that last step. And there are levels and levels and levels, and there is no end to that, how far you can go. In fact, you are limitless. There is no limit to it. तो जहां भी है बहुत, आगे भी बहुत है. आप जहां भी है आगे भी बहुत है. तो आगे चलते जाना है और जाना कहीं नहीं है. There's nowhere to go, nothing to do, and yet we keep moving forward. Okay, maybe one more last conversation before we close. Chandan Bhai says being woke in collective consciousness. Being woke in collective consciousness. Woke. W-O-K. Being woke in collective consciousness. Yeah, sure. Being awake. Yeah, being woke. Yes, who would like to come? Can कौन raise बात your hand. करेंगे? चलिए, कौन बात करेंगे? हाँ, तुषार जी. जय गुरुदेव संजीव जी. हाँ, तुषार, बोलिए तुषार. जय गुरुदेव. Fine. I'm in bliss. I'm enjoying every moment. जितना पॉसिबल है DYL जो भी मिलता है सत्संग में रहता हूँ, और सभी लोगों का फेस देख के, उनके साथ रह के, we are always feeling bliss. Thank you. Right. But देखिए तुषार, सभी ने अपने अपने लिए कुछ ना कुछ बॉक्स बना रखे हैं कि ये मेरी लिमिट्स ये है, मेरी बाउंड्रीज ये है. किसी का बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, किसी का बॉक्स थोड़ा छोटा है, कोई है जिसका बॉक्स बहुत ही छोटा है. कि उसमें से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, बाहर झांकना भी नहीं चाहते हैं. लेकिन हम ज्यादातर किसी ना किसी बॉक्स में some limitations we have. Yes. So if I talk about myself, okay, so as far as, let's say, abundance or money is concerned, I don't charge any fees for any of the activity that I do. So I don't feel the need anymore कि मुझे because it has become clear to me that what I want is not money. So or receiving money, I would say कि so I heard one story from Meenal. Some of you have met her, where she gave away this 6 crore flat and somebody received that 6 crore flat. But if I think for myself कि कोई मुझे अगर 6 crore का flat देगा, तो I don't think I would be comfortable with even accepting or taking that, receiving that. तो ये एक limitation है. ये in the infinite space of okayness and of love, there is no such limit कि 6 crore ज़्यादा है या कम है या देने के लिए बहुत ज़्यादा है. अभी मेरे लाइफ में एक मेरे जो my sister's music teacher, who has been teaching her Bharatnatyam for many years, I think, Lopa is here. So her son is a young guy, he's hardly in his mid-20s, had a minor accident on a motorcycle. छोटा सा accident था, कुछ ज़्यादा था भी नहीं, but it created such a spiral in his life कि वो छोटे accident के वजह से he was in bed for some time, and that caused some other problems and some other problems. Arun ji. Arun bhai. Please stay on mute, Arun ji. So he went into this spiral where now 2.5 years since that minor accident, he is completely bedridden, is suffering from bed sores,
and his hips have fused. So मतलब hip joint जो होता है movable वो fuse हो गया है, और and he is not able to even get out of bed. Now 2.5 years have gone by, and the doctors are suggesting an operation to replace the knees, and he needs some 15 lakh rupees to do that operation. Now एक limitation है. I see from my side, I'm creating a crowdsourcing, fundraising activity and all of that, to create that fund so that this boy, he's a mridangam player, studying mridangam at Shanmukanand Academy, and has been studying for 6 years, and had only 1 year left to go before he became a professional mridangam player. And imagine, now he's in bed, cannot even get out of bed. तो 15 लाख 16 लाख रुपए चाहिए. So I draw a box around, can I just give that 15 lakhs to him myself? I mean, theoretically I could, but I draw a little box, okay, I'll do fundraising, I'll raise the money for him, but I'm not able to bring myself to just give that 15 lakhs. I'm working on it. कल जाके मैं शायद कहूँगा कि मैंने दे दिए, but that's another story. But right now that box is there. So to move, so for some people, even 15 lakhs is not their box. Maybe for them, the box is, मैं 50 रुपए भी नहीं दे सकता, या 100 रुपए भी नहीं दे सकता. तो हर एक इंसान किसी ना किसी ऐसे बॉक्स में जी रहा है. So the whole journey is, one is to create your box which is bigger and bigger and bigger and bigger, and ultimately to step out of the box and realize the limitless soul, the limitless energy, the limitless being that you truly are, where there are no boxes, there are no limitations. There is no difference between this young man who is in bed and me and you, and we are all that one energy, that one source from which everything has come, and living like that. And in that limitless space, so Tushar, what I'm saying to you is, yes, you're in bliss, but there is always more to go. How can this bliss be spread and brought to hundreds of people, thousands of people, millions of people? And that's the journey. That's the journey. So Rishiji is asking, is the box fear or ego? Is the box fear or ego? Is the box fear or ego? Fear or ego? Who's asking? Rishi Punjabi. Rishi, Rishi, हाँ. Is the box fear or ego? हर एक का अलग limitation होता है. हमारी हर एक की कहानी अलग है. हमारी हर एक की जो परिस्थितियां रही है वो सब की अलग है. So your limitation and my limitation may be different. For somebody it's fear, for somebody it's pain, for somebody it's grief, for somebody it's sadness, for somebody it's depression, or for somebody it's anger. तो अलग अलग चीजें हैं जो हमें रोकती नहीं, हम अपने आप को रोक लेते हैं इन बातों को लेकर. So it varies, and you have to look for yourself. मैं हमेशा कहता हूं कि whatever you feel is your compass. Whatever you're feeling is your compass. Are you feeling fear? Are you feeling anxious? Are you feeling depressed? Are you feeling sad? All those feelings which take you away from who you really are. उसमें से कौन सा फ्लेवर आज का आपका फ्लेवर ऑफ द डे कौन सा है, आप खुद देखें. And that is your compass which tells you this is the direction I need to move in. This is the area that I need to look at and observe and accept about me, love and embrace that part of me, and go beyond that, so that ultimately we move on to the next level and the next level and the next level. So only you can tell which one is your limitation. But fear is a very common one, I'll tell you that. We ultimately, all of us have a fear of कि मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा. और ये फियर जो है ना, बहुत ही एक हंसने वाली बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा क्या होगा, वो हम क्या होगा क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, इसीलिए रुक जाते हैं.
क्योंकि क्वेश्चन मार्क के आगे आंसर देने की हमारे में हिम्मत नहीं है। तो अगर हम वो क्वेश्चन मार्क को हटाकर उसके आगे जाते हैं, मेरा क्या होगा, वहीं रुक जाते, बस पैरालाइज्ड, फ्रोजन, मेरा क्या होगा, भाई क्या होगा, जो सबका होता है वही होगा। ये शरीर एक ना एक दिन ड्रॉप हो जाएगा, ये मन एक ना एक दिन ड्रॉप हो जाएगा, वही होगा। और वो होने से भी आपको कुछ नहीं होगा, जो आप है, आपका शरीर चाहे ड्रॉप हो जाए, आपको कुछ नहीं होगा। आप तो, क्योंकि आप शरीर है ही नहीं, आप आपका मन, शरीर, फैमिली, बिजनेस सब कुछ छोड़ देते हो, हर रोज छोड़ते हो, हर दिन छोड़ते हो। जब आप सो रहे हो, you are leaving your house, your car, your family, your body, your mind, your clothes, your wardrobe, your business, everything you are dropping every single day. क्या हो जाता है? Nothing. Nothing happens. So dropping it is not a problem, but we are still, मेरा ये होगा तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब सोते हो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। You are still there, you still exist. In deep sleep also you still exist. So the fear that we live with is ultimately an unfounded, baseless fear. So, और जब हम ये जीवन और मौत को भी लेकर हम अगर उसके साथ भी हम ओके रह सकते हैं, then that is when you have dropped every single box. Yeah, Chandan. So I have this. One sec. Just one sec. Give me 1 sec. Yes, till then everybody can share on the chat box. What did you get from today's session? Any questions? You can please write it down till he comes back. Yeah, go ahead. Yeah, so I have been digging in this question, you know, मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? Good one. And so observation which I have found is that it's not about giving up the asking the question, you know, मेरा क्या होगा is a very pertinent question, and it's not about giving that question up. Rather than I looked at the other side of it. With respect to what? With respect to what मेरा क्या होगा? So if my, like you said, the box, you know, it's such a relevant analogy that if your box is that kind of a thing, जिससे आप जो fear है, वो मेरा क्या होगा वाला आपको और गहरे कुएं में डाल देगा. Versus you can raise the bar of that question itself, you know, with respect to what? So if I say with respect to experiencing God, मेरा क्या होगा? If I keep on asking that question with that context, then I will, you know, raise myself to that level. And so journey is not about giving up मेरा क्या होगा is something very important and very valuable thing if you can be directed by a guru to take you to that level. That तुम्हारा क्या होगा अगर तुम्हारा ये with this context if you operate. So that was absolutely. my observation. I was asking, you know, about insecurity to somebody. Right. That's it. Insecurity तुम्हारी जो है, it should be with level to God, nothing lesser than that. Then it works. Otherwise, Absolutely. it's all a trap. Right. Very true. Very true. And ultimately you realize कि वो मेरा जो पूछ रहा है वो है ही नहीं. There is no existence. There is no reality to that मैं जो बोल रहा है कि मेरा क्या होगा. And that is when you step out of the box into the real you, जिसका कुछ होता ही नहीं है और सब कुछ उसी का होता है. And that's the fun. In fact, यही है कि जो so called negative बातें हैं, so called negative, जैसे गुस्से की कोई बात कर रहा था, I think अमित, तो गुस्से को लेकर या तो हम उस नेगेटिव क्वालिटी को लेकर या तो हम सोच रहे हैं कि इसको मैं कैसे बदलूं, मैं कैसे ये हो जाऊं वो जाऊं. लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारे अंदर में ये ऐसी है क्वालिटीज, तो उसी क्वालिटी को देखकर हम अपने आप से कह सकते हैं कि
और भी विनम्र हो जाए, और भी नम्रता बढ़े हमारे में, और भी हम्बल हो जाए। क्योंकि देखिए मुझे तो फॉर एग्जाम्पल दिन में 10 बार गुस्सा आता है, अगर यार मैं ऐसा हूं जिसे दिन में गुस्सा आता है, तो मैं कैसे घमंडों में घूमूं? हाउ कैन आई वुड बी इवन मोर हम्बल कि यार मुझे तो 10 बार गुस्सा आता है, प्लीज प्लीज लेट मी बी हम्बल, मोर एंड मोर हम्बल, because that is true about me. So even this question about mera kya hoga transforms into a energy taking you ahead if you use that same question in the right way. Beautiful. And when that state happens is when life, death, all of this becomes just part of this limitless game, and we live closer and closer to divine self that you are. तो उस पे से गाना याद आ रहा है तो क्या था, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, ओ कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते. This song is for the last 3 conversations, Tushar, Rishi and Chandrahas. कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, फूल ही फूल जिंदगी बहार है, तय कर लिया हा हा हा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. डंग डंग डंग. What is the first line of this song? It's missing. What is it? आज फिर जीने की तमन्ना. It doesn't start that way. No, it starts something else. Okay. फूलों के something like that it is, I think. Jagruti ji, seat. Jagruti is right fast. कांटों से खींच के हाँ, कांटों से क्या, कांटों से खींच के ये आंचल तोड़ के बंधन बांधे पायल. It's such a beautiful song. कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल ये चला. This is the process. This is the process of awakening. और जो कांटे हैं वो भी हमने ही बनाए हैं, उनसे ही हमारा ही आंचल हम ही खींचेंगे और उनसे निकलकर बाहर towards freedom, towards love, towards joy. Wonderful. Any final questions, thoughts, or anything anyone would like to share? So this is the format. Also, the open door sessions I've started in this format. So everyone is invited once a week, every Thursday at 9. If someone can just post the link on the chat. Everyone is invited. It's musical. It's this exploration of oneness, exploration of who I am, and exploration of how we can all live what we already know. How to make that connection stronger and stronger and stronger and stronger and stronger. कैसे हम हर पल में, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति में यही याद रहे, who I really am, who that other person really is, what this whole world is. वो ऐसे इतना गहरा हमारे अंदर ऐसा बैठ जाए, ऐसा उसका वास हो जाए कि बस वही दिखे. जैसे आज हम अपने आप को सोचकर कि मैं ये हूं, मैं ये शरीर हूं, ये इतने सालों से ये प्रैक्टिस किया है, वो उसको निकाल कर वही जितना बैठ जाए कि and then what is that song?
तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। Everything is perfect. Everything is perfect. You are perfect the way you are. You are perfect the way you are. You are perfect the way you are. हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, ये रास्ता है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। So I bless each one of you that this presence, this divine presence, which is your true nature, जो आपकी असलियत है, जो देवत्व है, जो आप खुद है, वो देवत्व ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा आपके जीवन में प्रकट हो, आपके जीवन में ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा वही व्यक्त हो। Let your life be an expression of who you really are, which is who I am, which is what everything is, which is the one. एक गाना आपके खुद के लिए हो जाए। Okay, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। हाँ वो भी है, और दूसरा, और ये आजकल ये हमेशा हम गाते हैं। सर सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सॉरी, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी होगा देखा जाएगा, या वो मैंने अभी तक सीखा नहीं है, वो सीखना, इट्स ऑन माय लिस्ट। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना। जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना। जो मेरे दिल को दिल बनाती है,
तेरे नाम की कोई धड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। यही है हाउ डू वी। वाओ संजीव भाई, मजा आ गया। राइट, तो ये जो सॉन्ग्स है ना, सो वी यूज देम एज अ टेम्पररी स्टेपिंग स्टोन। जैसे वो पहली जो लाइन है, मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, तो वो तभी तक सिर्फ कहना है जब तक हमें याद ना आ जाए कि वो चांद भी मैं ही हूं। जब तक नहीं याद आता है तब तक कहते रहो कि मैं दिल जला अंधेरा हूं, लेकिन असल में आप वही चांदनी हो, वही धड़क हो, वही जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हो। यू आर ऑलरेडी दैट. So until you realize that, we can sing songs like this, but when we realize that, we are that. Wonderful. Love you all. Thank you so much for spending Super. this evening with all of us and being present. And I look forward to being with all of you again and again and again. Thank you, thank you, thank you, and love you, love you, love you. संजीव भाई, it was lovely. पूरा हफ्ता मेरा म्यूजिकल तो जाने ही वाला है आज। Yes, yes, all of us. Isn't it? All of us are good, taken beautiful messages from here. आज तो कोई और ही नशा था हाँ, संजीव जी। Absolutely, absolute. चलो उस बात पे एक और गाना। Yeah, जो भी कहना है संगीत में कहिए, जो भी कहना है संगीत में कहिए। Right. Lovely, lovely, lovely. यही कहा तो और एक गाना याद आ रहा है, एक मिनट, कहाँ गया वो। So बने रहिए, चलते चलते एक और गाना आ रहा है संजीव जी के साथ। So let's all sing it together. Mics on mute. Please Yes, camera प्रकाश on जी, एक कीजिए. गाने के बाद आपको लेते हैं हम। Please open your camera so that we can have heart-to-heart connection with all of you all. At least the last song. नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया, सुनो ओ झूली, मैंने तुमको दिल दिया। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो, रहो न होश में दीवानो। नशा ये प्यार का नशा है, मेरी बात यारो मानो, जब से मैंने तुमको दिल दिया, मीठा दर्द ले लिया। सॉरी, गाना कंप्लीट कीजिए। अच्छा ऐसा है क्या? Of course. खुली खुली निगाह में बलासी शौखियाँ छुपी, खुली खुली लटों में भी है घटा की मस्तियाँ रुकी। ये हया, ये अदा, ये हंसी, ये नयन,
दे गए मीठी मीठी सुचुभन। सुनो ओ सत्संग वालों, मैंने तुमको दिल दिया। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो। नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। Now think of divine in this next verse. नजर से यूं मिली नजर, हाय दीवाना मैं हो गया। असर ये क्या हुआ असर, कहाँ ये मैं खो गया। बह के कदम, बहका है मन। छा गया मुझ पे दीवानापन। सुनो ओ सभी, हमने सबको दिल दिया। मैंने भी दिल दिया। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो। नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया। सुनो ओ सभी, सबने सबको दिल दिया। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो। नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। तारा रा रा ना 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 ना, तारा रा रा तारा तारा रा। सुनो ओ सभी, हमने सबको दिल दिया। ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो। नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। नशा ये प्यार का ये मेरी बात यारो मानो। नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। Sanjeev bhai, the Wow, chat wow, box is आज तो bursting with praises. Chat box is bursting with happiness, joy, love. सब डूब गए। Thank you, सब thank you, डूब thank गए। ये you. वीडियोस Wonderful. कैसे चालू हो गई मुझे नहीं समझ में आ रहा है। Videos सुपर only. सुपर। ये Wonderful. प्यार का Sanjeev bhai, you नशा है might hear जूली। प्यार का everybody's नशा यूं ही जूली जी, प्यार का नशा है, प्यार का नशा ऐसे ही होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। संजीव भाई आप रुकिए, सबका सुनते जाइए, 2 मिनट रुकिए। सारा का सारा बोझा उतर गया। सारा पूछा। नशा ये प्यार का नशा है। हर नशा प्यार का ही नशा है, चाहे दारू का हो चाहे कुछ भी हो। अल्टीमेटली वो नशा प्यार का ही है जो ढूंढ रहे हैं सभी। इसी नशे जिसमें का डूब जाने को मन चाहे वही प्यार है। वही, इसकी साइड इफेक्ट भी नहीं है। संजीव जी बहुत बढ़िया था ये वाला। हाँ, मजा आ गया। हार्दिक। ओके, वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये नशा अगर गुरु का नशा हो जाता तो फिर कुछ करना नहीं पड़ता है, सब होता है अपने आप। सब अपने आप ही होता है। करते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जेनिफर जी हैज पोस्टेड वन लिंक। Thursdays at 9, everyone is invited. It's free and open. We continue, and even before that, after that, in that, now and for. And Julie, when you said कि ये week तो musical, सिर्फ week नहीं. Life. Let life be. All the life. Let Yes, life be whole life musical. is musical. Let whole life be just this musical journey. Yes. So संजीव भाई 2 मिनट रुकिए, please hear it Okay, from sure, everyone. sure, and sure. go. Yes, Prakash ji, we start with you, हाँ। and Luka ji, अब रुकना, please, we want to hear from you. थैंक यू संजीव जी। किस शब्दों में आपका आभार हम व्यक्त करें
कुछ शब्द नहीं है हमारे पास। आज की जो यात्रा थी, जो अंदर की यात्रा थी, ये इनवर्ट जर्नी थी, ये अंतर यात्रा थी, बहुत सुंदर। मतलब इतने मतलब अच्छे तरह से आप हमको अंदर लेके, हर शब्दों में, हर गाने में आपने हमको अंदर दुनिया में लेके गए कि ये ऐसा कि उससे हम जो रोज हमको चॉकलेट देता है और हमको फुसला के चले जाता है, तब ये दुनिया का। अब हमारा मन ऐसा कर रहा है कि भाई हमको चॉकलेट नहीं चाहिए, हमको चॉकलेट देने वाला ही चाहिए। हलवा वाला आ गया, हाँ, हलवा वाला आ गया, हलवा वाला। राइट। और अल्टीमेटली वो आप खुद है। ईच एंड वी आर ऑल वन, वी आर ऑल द सेम। वो कहीं से भी आ सकती है ये चॉकलेट। लाइफ इज जस्ट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, एज दे सेड इन फॉरेस्ट गंप, याद है तो? लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। बहुत सुंदर आपकी, मतलब आज की तो म्यूजिकल शामवती इतनी बढ़िया हुई कि ये नशा पूरा महीने छाया रहेगा जब तक आप नेक्स्ट यात्रा तक, हमारी नेक्स्ट सत्संग नहीं लेंगे, वापस हम म्यूजिकल सत्संग में नहीं आएंगे, तब तक ये नशा छाया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आते रहिए, बिल्कुल आते रहिए, और थर्सडेज को भी आइए। जरूर। एंड वंडरफुल। हाँ, Yes, Lopaji, we want to hear something from you. Lopaji, please unmute yourself. Hello everybody. I am the lucky sister, younger sister of Sanjivji. yes, and I'm the lucky brother. This is the lucky brother-in-law. And the lucky brother-in-law over there. So I am always blessed to be in this kind of an ambience whenever we are together. We enjoy this all the time, and we're just blessed, and it just made our life so colorful and happy and joyous. And I'm in this unconditional state of unconditional joy, especially in the evenings. I don't know, it's just a divine grace that I'm just bursting with joy in the evenings. Every evening this has happened, and the time that it goes on has started expanding. So it's all just, blessings of being with all of you, and being with Sanjeev, and being with this wonderful grace that we are in. So we enjoyed today's evening so much. It was beautiful. You're not from India, right? Lopaji, you don't stay in India, right? I do. I'm in Bombay. Okay, you're in Bombay. Okay. Very close to where my brother lives. So we meet very often. And so that's why I can be with him so much, because we live very close by, in fact. Okay. Great. Yeah. Master, anything from you, Master? So this was a very special evening, is it not? We enjoyed every moment, and this is what we enjoy every Thursday. So please, all of you, do come. And as Sanjivji warms up, this flows and flows from it, oozes out from heaven, from his mouth. So please do come, everyone. We invite you every Thursday, 9 p.m. Okay? And I loved every moment of this evening. Thank you very much. Love you all. Who's coming next? Anybody wants to say something? Thank you. Kritika ma, आप कुछ बोलेंगे, Kritika ma? Yes. I am always blessed and always feel so heavenly when I am with Sanjivji. It's so great of you, Sanjivji. I love you. I love you. I love you. That is the only thing I have got for you. Such a musical heart you have got that connects to everybody. Sonalji. Love you. And Sonalji, this you want to heart say belongs to everybody. You are also that. We don't have to simply just wait for these satsangs or anything. All of life. Let all of the entire life be like this. We don't have to. Great. Thank you so much. Yes, one Sonalji. We are experiencing this on every Thursday. Just this Thursday, we have started with songs. But so with Sanjivji, it's always 1:1, and that's the most important part. He gives complete 100% to the person, and he tries to resolve each and every person's problems. Challenges. किसी को प्रॉब्लम तो है ही नहीं. Superb. Thank you, Sanjivji. I love you. Most welcome. Love you. Thank you. Deepak is ready, I think. पल में कोई नहीं है.
बस एक संजीव जी. बस एक हम है, बस एक तुम हो. Beautiful, beautiful. बहुत I मजा think आया. I'm ये सब डूइंग से निकल करके एकदम रिलैक्स स्टेट में कुछ yes, करने की जरूरत नहीं है. ऑल इज वेल. yes. So संजीव जी के साथ बैठ के सब म्यूजिकल हो जाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. और मैं आपके साथ रहकर और म्यूजिकल मैं भी हो जाता हूँ. तो यही लेकर हम अभी रिट्रीट अनाउंस करेंगे. So we'll all spend 2-3 days together somewhere around Mumbai. I'll announce soon and look forward to Let me being know. with all of you. Yeah. Great. That's great. So look forward for that message. Yes. Put it up. So yes, Yes. we'll take a wrap from So all can of we, you. Meera ji, can we just take Hardik a wants to say quick? something. Hardik, हाँ. Yeah, I think सर ये स्कोप कैंप में आप आ जाओ ना. प्लीज प्लीज स्कोप कैंप में आ जाओ, वहाँ पे महफिल अच्छी जम से जाएगी. बिल्कुल जमा ही है. बहुत सारी स्कोप कैंप वो बहुत जब सारे भी आते हैं वो तो होता जमा ही ही है. होता है. वो तो होता ही होता है. है. Yes, I'll be so. Also, I'm doing a lot of sessions with schools and colleges. So, any one of you who is associated with any school or college, please reach out to me. We'll do this 2-hour seminar training the youth in how to be happy, how to be joyous, how to be exam stress free, and how to just live as enjoy that moment of being a student, learning so much that they are learning instead of getting caught up in drugs and so many other challenges that they end up with. तो schools के साथ अगर किसी का भी कोई connection है anywhere in So Sanjay bhai, world, you need a Zoom or you even need in personal? even in Canada, I'm going to USA in a couple of months. तो Canada, USA में भी अगर कोई है, like Bhavisha is in Boston. I think there are some people from Canada also on this forum. So I'll be in the US and Canada next in May, June, July. तो वहाँ पर भी कोई स्कूल कॉलेज जिसमें हम ये सेशन कर सकते हैं, I'd be most happy to do it. So you'll be doing it personal, right? In person. These are in person Yeah, sessions. okay. Yeah, these are in person, not on Zoom. Mm. So because we take 200, we have done as many as 800,000 children at a time. तो वो Zoom पे नहीं होता है, वो साथ में होके हो जाता है. So make that's also there. And in fact, one thing I just realized कि जैसे वो कहते हैं ना कि the cobbler's children go without shoes, वो अगर आपने सुना है, cobbler's children go without shoes, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कातर खड़क में अभी तक क्यों नहीं किया है ये. So Kishore, Kishore, Narendra ji, whoever is involved with the school, please let's do a session for the school kids. Yeah, that's of course very true. It's like cobbler's children going without shoes. उनके लिए हमने ये 2 घंटों वाला सेशन हमने राजकोट में किया, मलकापुर में किया और बंबई में तो बहुत सारे किए, लेकिन कातर खड़क में सोचा ही नहीं. It's like that. So yes, Kishore bhai, take it forward. yeah, Kishore and whoever Yes, else. yes, sure. Yeah. Jagruti ji both. Great. Swati, Sheetal, कुंभकर्ण nice to घरे see ढाकने everyone. कमी हाँ जी, કહેવાય ને કુંભારના ઘરે ઢાંકણાની કમી જ હોય હંમેશા. બસ એવું જ કાંઈક કુંભારના ઘરે ઢાંકણાની કમી, એવું જ કાંઈક થયું. Yep. Okay, Meera, can we just take a short SI for Sanjeev bhai and everyone today? Okay, that will be fantastic. So shall we all quickly with our open eyes, today with our open eyes, we'll do a segment intending, not closing eyes. And it'll be a very quick one. And we'll thank our last 1.5 hour to Sanjeev bhai for this beautiful session, what he's given us. And he's kept our hearts singing. So we'll thank him for that. We'll thank Pujya Amrit Vivek ji for this platform. Because of that, we've all been connected. We'll thank our body to be in best of health to listen to this beautiful and start the healing. Quickly, we'll release our fears, whatever we have. With your lines, we release all our fears. And once we release our fears, we can attract abundance. Yes, abundance, what Sanjeev bhai said, we need only that. What we need is experiences. For me, my family, and everyone around me. And then our next 1.5 hour, it's going to be very musical, and we are going to spread this heart of joy to our family. You know, our family is waiting to hear that I love you.
So we are going to spread this message to our family, saying, I love you. And I've learned this today, to spread love. Yes. And above all you participants for being so wonderful today with your videos on. It was just awesome. Today, even we've enjoyed. Lovely. Yes, absolutely. So thank you to your 90 plus participants today. We had super. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Sanjay bhai. It was a Love you beautiful all. session. Love you. And next satsang, Abhi, you said you are enjoying the videos. Let everyone have videos on next time. Yeah. Even more. Yes, yes. Surely, I think all will come running now. So the power was in Sanjeev bhai's hands today. So the same power can keep those videos on next time. देखना है दम कितनी ताकत बाजुएं जो भी हैं कातिल भी. Okay, great. Thank you all. Love you all. Thank you. Bye. Love you. Love you. So with that, Jagrati ji, shall we take a wrap? Yes.